So a very good evening to all the Khayal community members. This is me, Vikas. I'm going to be your host for today. And for those of you who are joining us for the first time, Khayal community is a collection of seniors and elders from all over India. And we are an online community. We meet every day in the evening at 5:30. हम रोज मिलते हैं और रोज अलग अलग एक्टिविटीज हम सीनियर केयर और एल्डर वेलनेस के ऊपर रखते हैं. तो आज ट्यूसडे 29 मार्च है एंड आज हम टेक ट्यूसडे का सेशन रखते हैं हर ट्यूसडे को, जिसमें वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, हाउ टू टैकल दिस न्यू एनिमल कॉल्ड टेक्नोलॉजी दैट वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स टू. एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि ऑनलाइन बहुत हमने सुना है कि फ्रॉड होता है, लोग वहां पे हमें ठगते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट चीजें होती है. तो ये एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं. एंड ऑल्सो वी ट्राई टू लर्न अबाउट द इंटरनेट, वी ट्राई टू लर्न अबाउट द मोबाइल एप्लीकेशंस एंड ऑनलाइन बैंकिंग टू मेक आवर लाइफ much easier. So today in Tech Tuesday we have a very special guest, and we have Triya Shah, who's come from Bureau, and she is going to take a special session today on online financial risk and fraud. तो ऑनलाइन जो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, हमारे परिवार वालों को कैसे बचा सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स को इसके बारे में हाउ वी कैन गिव देम मोर इंफॉर्मेशन so that they also can protect themselves from online fraud. So a very good evening, Triya, and a warm welcome to the Khayal community. We hope we are going to have an amazing session with you today. And the Khayal community, like I told you, all our members are 50, 55 years and above, but they are very active. We take part in a lot of activities, and especially we like to learn new things. So, we would definitely be very glad to learn about online security and, data protection from you. Great. Thank you, Vikas. Hi, everyone. Like Vikas mentioned, I'm Triya, and I'm from a company called Bureau. Bureau actually is a company which operates in the fraud prevention industry. We help a lot of apps in today's day and age prevent fraud. We help them identify कि कौन सा user उनके platform पे जो है वो fraudulent है कि नहीं, वो अगर fraud commit करेगा कि नहीं. So we help them in that aspect. I am one of the early employees at Bureau. मैं पहले 20 employees में से एक हूँ, and मैं currently Bureau में growth में काम करती हूँ. So today I will talk to all of you about financial fraud and risk, and why is it important कि हम अपना personal information private रखें और हम कैसे fraud को होने से prevent कर सकते हैं. So I'm just going to share my screen. Let me know once it's visible to all of you. Definitely. So Triya, thank you once again. जैसे Triya ने बोला, she works with Bureau and they specialize in fraud prevention, and also they help companies to go ahead and identify actors, bad actors on the internet who will go ahead and be disruptive. तो ये आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं और फ्रॉड प्रिवेंट करने के लिए भी मदद करते हैं. तो as you know, it's an amazing company, and Triya has been amongst the early employees, and we would love to see Triya what we would like to offer our Khayal community, and also make us more aware of the problems that we can face when we are doing financial transactions online, okay, and how we should not be scared of these things when we understand the entire system. So let's go ahead, and Triya, definitely we can see your presentation. We are ready for it. Thank you so much. Okay. So to start with, we have all started relying on the internet for our basic needs. Groceries से लेके payments तक, we use the internet for everything. अभी this has made our life very easy. हमारी life बहुत easy हो गई है इससे. लेकिन इसमें क्या हो गया है कि this poses a risk of fraud. This has increased the risk of fraud in our lives. While this is an unfortunate truth, इसमें अच्छी बात ये है that we can prevent fraud from happening. We just need to be cautious and well informed about it. So how exactly does fraud happen? One of the most common ways in which fraud happens is through something that we call phishing calls.
तो अभी इसमें क्या होता है कि आपको इम्पोस्टर या फ्रॉडस्टर जो है वो आपको कॉल करेगा और वो बोलेगा कि वो इंश्योरेंस एजेंट है, और दे विल प्रिटेंड टू बी अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर्स, एंड दे विल टेल यू दैट it's a very urgent situation or they are in some kind of an emergency, and that you need to share your personal credentials with them, or you need to transfer some amount of money to them. They will try to pressurize or scare the person जो उनके सामने है, उनको बोल के कि सिचुएशन बहुत बुरी हो गई है, उन्हें अगर उन्होंने जल्दी ये कुछ काम नहीं किया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, वैसे वो उनको डराएंगे और उनको बोलेंगे ऐसा करने के लिए। अभी अगर if this situation comes in front of you, then the first thing you need to do is you need to stay calm. आपको बहुत ही शांत रहना होगा और थोड़ा टाइम लेना होगा। When you take this time, you should always check back with your authorities. If they are saying that they are an insurance agent, then check with your insurance provider. Authorities जो है वो हमेशा आपको सिनेरियो के बारे में सच बताएगी, वो हमेशा आपको the truthful aspect बताएगी कि अगर ऐसा कुछ है भी कि नहीं। This will definitely help you confirm कि if you should act on this or if you should not act on it, or it will give you insight into whether this is a fraudulent situation that you are present in. So that is the first thing. That is something we call wishing calls. Next is something that we call as a lottery fraud. What happens in this is that the fraudster will either call you or they will send you an email and they will tell you that you have won a lottery. तो लेट्स से कि अगर आपको किसी ने कॉल किया या ईमेल किया और बोला कि आपने 5 लाख की लॉटरी जीत ली है, तो उसमें सब ऑब्वियसली बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि दे विल टेल यू दैट एज प्रोसेसिंग चार्जेस, एज टैक्सेस या शिपिंग चार्जेस में आपको 10,000 रुपए पे करने हैं। यू जस्ट नीड टू पे 10,000 रुपीज टू गेट 5 लाख रुपीज। नाउ इन दीज सिचुएशंस व्हाट हैपेंस इज कि लोग 5 लाख के सामने 10,000 रुपए हमेशा दे देते हैं, ये सोच के कि ये कितना ही छोटा अमाउंट है 5 लाख के सामने। अभी यही करने पर एक्चुअली लोग डिफ्रॉड हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने कोई लॉटरी जीती ही नहीं होती है। तो इन दीज सिचुएशंस द फर्स्ट थिंग यू शुड एक्चुअली डू इज आपको चेक करना चाहिए कि आपने लॉटरी में पार्टिसिपेट किया है भी कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि लॉटरी सुन के लोग इतने खुश हो जाते हैं, दे बिकम सो एक्साइटेड दैट दे एंड अप पेइंग एंड दे बिकम वेरी हैप्पी। But usually what happens is they have actually not participated in any lottery to win something. And in case अगर आपने लॉटरी में पार्टिसिपेट किया है तो आपको हमेशा वापस अथॉरिटीज के साथ चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये एक्चुअली हुआ है कि नहीं, अगर मुझे अमाउंट पे करना है कि नहीं। और भी चाहिए तो हमेशा अपनी कम्युनिटी में चेक कीजिए। ऑलवेज चेक विद योर कम्युनिटी दैट इज दिस समथिंग दैट आई फाइंड ट्रस्टवर्दी एंड इज दिस समथिंग आई शुड एक्ट ऑन। So Triya, when people go ahead and call you, मुझे तो ऐसे बहुत मैसेजेस भी आते हैं कभी कभी, आई ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स, बट बहुत बार मुझे मैसेज के साथ एक लिंक भी आता है, कि मैं यहाँ पे जाके कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। बहुत बार मुझे ईमेल भी आता है और ईमेल में लिंक भी आता है। तो क्या हमें उस लिंक पे जाके और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बिकॉज टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, और वी शुड जस्ट गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड नॉट बी देयर बिकॉज उसमें कुछ हानिकारक हो सकता है? नहीं, absolutely. You should never ever click on any of the links that you receive through email, text messages. अगर आपको कोई कॉल करके भी बताएगा कि आपको मैसेज आया है, ये लिंक पे क्लिक कीजिए, रिगार्डलेस कि वो क्या बोले, what situation they make up. If the sender is unknown, if you don't trust the sender, don't never click on any link that you receive. ओके, तो अगर हम किसी को जानते नहीं है पर्सनली और हमारी कोई जान पहचान भी नहीं है, तो वी शुड नॉट क्लिक ऑन दैट लिंक, क्योंकि वहां से बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे वायरसेस आ सकते हैं, या दे कैन गेट एक्सेस टू आवर फोन, और दैट कैन लीड टू फाइनेंशियल फ्रॉड इन द फ्यूचर। Absolutely. These links can, open a portal to so many things. So you should never click on them because they are a very easy access to defrauding users, especially through, your mobile or your laptop. So you should never click on these links. Okay, so just don't open the Pandora's box. Just don't open it. Okay. Sure. So next what we've come to is something that is very common, I'm sure. It is OTP SMS fraud. So what usually happens in these situations is कि
someone will call you or they will send you a message stating that they are, they will pretend to be from your bank. वो बोलेंगे कि वो आपके बैंक से कॉल कर रहे हैं, they will say that we need to update or upgrade your debit card, या उन्हें आपके बैंक अकाउंट में कुछ चेंजेस करने हैं, या वो ऐसे भी they can tell you that they are offering you a loan. बेसिकली दे विल प्रिटेंड कि वो कोई बैंक से कॉल कर रहे हैं, तो आपका वो ट्रस्ट जीतने के लिए करते हैं ऐसा। तो उसके बाद वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि जो भी रीजन बनाया है कि अगर मुझे डेबिट कार्ड अपडेट करना है आपका, what they will do is they will tell you please share your OTP SMS that you have received on your mobile number, or share the PIN details for your bank account. Now what happens is when people share their OTP SMS or PIN with someone else, this allows the person in front of them, the recipient, to access their bank account. उन्हें आपके बैंक अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी और को मिल गया एक्सेस, तो वो आपको डिफ्रॉड कर सकते हैं, या आपको दिस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ मनी फॉर यू, आपके पैसे चले जा सकते हैं इससे। तो इन दीज सिचुएशंस प्लीज नेवर एवर गिव योर OTP SMS टू एनीवन। ये हमेशा याद रखिए कि OTP SMS कभी शेयर नहीं करना चाहिए, पिन कभी शेयर नहीं करना चाहिए, और इससे ज्यादा ये कि आपका बैंक एक्चुअली आपसे कभी नहीं मांगेगा। दे विल नेवर आस्क यू फॉर योर OTP SMS. And even if you are in a situation कि आपको थोड़ा confusion है, you are not sure if you should share or not, again always go back to your bank, check with them कि hey, मुझे किसी का कॉल आया है, कोई बोल रहा है कि मुझे लोन ऑफर किया जा रहा है, और my debit card is being updated, what should I do, मैं क्या करूँ? And then talk to them, and they will always reassure you कि what is the right next step to take in those situations. However, one very important thing to also make sure when you are contacting your bank is that always verify the website from where you are getting the phone number. कि अगर एक्सिस बैंक या ICICI बैंक है, उन्हें कॉल करना है, तो हमेशा ये याद रखिए that the website that you are trying to get the customer care call number from, you should always make sure कि ये authentic उन्हीं की वेबसाइट है। ओके, ऑलराइट। तो ट्रिया, जैसे आपने बताया है आप ब्यूरो में काम करते हो, और आपकी जो कंपनी है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ऑलवेज डीलिंग विद फाइनेंशियल रिस्क एंड फ्रॉड। तो आपके हिसाब से बहुत बार लाइक आई एम लुकिंग इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ यूजर, जब मैं आप किसी भी बैंक के सिस्टम्स यूज करता हूँ, क्या वो बैंक के सिस्टम्स सेफ है, रोबस्ट है? क्या मेरा डेटा उनके साथ सेफ है? क्योंकि बहुत बार इतने सारे जो स्कैम्स होते हैं, वो क्या ये बैंक के लीक के वजह से होते हैं, या बहुत बार हम जो सिस्टम फॉलो करना चाहिए वो फॉलो नहीं करते क्योंकि शायद हमको जानकारी नहीं है, शायद ये हमारे लिए नहीं है, या हम फिर भी अनजाने में कुछ गलती करते हैं? आपके हिसाब से, क्योंकि आप ये जो ब्यूरो, आपका जो कंपनी है, इट ऑलवेज इज डीलिंग विद फ्रॉड्स, तो व्हाट इज द मेन रीजन और व्हाट आर द टॉप रीजंस आप बता सकते हैं? क्योंकि इफ वी नो द रीजंस, जो इंफॉर्मेशन हमें अगर पता चलेगा तो हमें पता है हम ये फिर वी विल नॉट गो दैट वे, वी विल ट्राई टू बी अ लिटिल बिट मोर स्मार्ट, a little bit more informed, and use the correct method that is to be used in financial transactions. No, absolutely. That's a great question, actually. So one thing I think from all our experience at Bureau is I can tell you that the banking systems are absolutely safe. They were built in such a way कि उन्होंने बनाया ही वैसे है, because of course, right, they have to take care of the financing of so many people across the country and even globally कि they definitely the systems are extremely safe. आपका डेटा उनके साथ बहुत सेफ है, उधर आपको कोई इशू एक्चुअली नहीं आ सकता है। However, अभी because like I mentioned, digitization, advent of technology के साथ क्या हो गया है कि fraud का नाम banking के साथ बहुत जुड़ गया है, and this has actually happened because of the fraudsters who are employing all the techniques that I just mentioned. कि बहुत बार लोगों के साथ क्या होता है कि लोग कॉल करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, और उनका OTP SMS ले लेते हैं या उनका पिन ले लेते हैं, या फिर वो कॉल करके बोलते हैं कि मुझे पैसे ट्रांसफर करो। ये छोटी छोटी सिचुएशंस और सिनेरियोस क्रिएट होते हैं जहाँ पे लोग इम्पर्सनेट करते हैं बैंकिंग ऑफिशियल्स को, और वो उस हिसाब से आपको ट्रिक करने की ट्राई करते हैं। दैट्स हाउ दे ट्राई टू ट्रिक यू। सो आई थिंक इन दीज सिचुएशंस अगेन द मोस्ट important thing is to always never act in haste. Be very calm.
And always check back with the bank, because the bank is there for you. The bank will support you. The bank will tell you what to do. You shouldn't, you shouldn't really go with what the person is trying to ask you. You should always check back. ओके, थैंक यू। सो द बैंकिंग सिस्टम्स बहुत ही सिक्योर है। शायद मेरे ही अकाउंट में कुछ इश्यू है कि मैं जब भी पैसे डालता हूं तो थोड़े दिन के बाद वो पैसे खत्म हो जाते हैं। सो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद माय अकाउंट, आई एम यूजिंग इट विदाउट मी नोइंग अबाउट इट। ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड। Sure. So now we'll talk about how can you prevent this from happening to you, right? So जैसे मैंने पहले बताया है, the most important thing in such situations is that you should always remain calm and you should check with the authorities or you should check with your community. You know, people are there to help. You should always talk to them. आपको कोई ना कोई help insight definitely मिल जाएगी, which will allow you to take better decisions in these situations. However, there are a few more tips that you can, sort of do, which will help you a little more or which will help you actively prevent fraud from happening to you. कि अगर कुछ आपके साथ हो भी नहीं रहा है, कि आपको कोई कॉल नहीं भी आ रहा है, तो भी there are a lot of things that you can do जिससे आप बच सकते हो fraud से. Now, to start with, the first thing is never interact with unknown messages. We spoke about this at the start as well. If you do not recognize the sender, never ever interact with the unknown messages. Don't click on them, don't reply to them. If you get a message saying that, hey, ये कोई है आपके जान पहचान वाला है और ये नंबर पे कॉल कीजिए, फिर भी अगर आप नहीं जानते हो, वो नंबर आपके पास नहीं है, तो आपको वो एक्सेस करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज never transfer money to strangers without reconfirming the purpose and identity. ये जाने बिना कि आपको क्यों किसी को पैसे भेजने हैं, कि कौन है जो आपसे पैसे मांग रहा है, ये सब कंफर्म किए बिना never transfer money to anybody. Next, never click links that you receive from strangers. कोई भी मैसेज, कोई भी ईमेल में एक लिंक आए जो आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो या फिर आप मैसेज को इजीली समझ नहीं सकते हो, तो उस पर क्लिक मत कीजिए. नेक्स्ट इज आपके बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, एसएमएस, एटीएम पिन, ये कुछ भी किसी के भी साथ शेयर मत कीजिए. नो मैटर आपको वो क्या बोले, वो बैंक से है, इंश्योरेंस एजेंट है, कुछ भी बोले, नेवर शेयर दीज डिटेल्स विद एनीवन. एंड फाइनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, always check in with your community whenever you are in a situation that you don't recognize और आपको confidence नहीं है कि मैं ये situation में क्या करूँ. Never ever, like always check in with your community and never take decisions without checking with someone. Okay, so Priya, thank you, for all these insights जो आपने हमारे community members के साथ share किया है. Now maybe हम हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए इनवाइट कर सकते हैं. अगर उनके पास कोई डाउट्स है या एनी क्वेरीज है उनको विच दे वांट टू बी आंसर्ड, Triya would definitely like to answer those questions. So if you have a question, you can raise your hand or you can put it up in the chat, and we'll definitely try to do our best to answer that query. तो ट्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्कैम्स जो देखते हैं, इज इट वेरी कंट्री स्पेसिफिक और इट इज एनी रीजनल स्पेसिफिक और देयर इज एज स्पेसिफिक जो स्कैम्स जो होते हैं, स्कैमस्टर्स जब टारगेट करते हैं लोगों को? तो रीजन स्पेसिफिक कैन बी, द नाइजीरियन प्रिंस वाला फ्रॉड जो बहुत बार होता है. yes. कि लोगों को ईमेल आता है कि कोई नाइजीरियन प्रिंस है एंड यू नीड टू send him some money, and then if you do that you will get a lot more money because you are helping him. तो ऐसा सब होता है. तो ये बहुत commonly known frauds है, right? तो इनसे हमें definitely caution करना पड़ेगा. Like you should definitely be cautious about that. As for age, ऐसा नहीं होता है. So what they usually do is they try to find people who are not well informed about fraud. जो उन्हें believe कर लेंगे, जो बोल रहे हैं वो कर लेंगे. Which is why one of the most important ways to prevent fraud is to be as well informed about it as possible. कि अगर आपके साथ कोई fraud करने की try भी करे तो आप वो recognize कर दो and you can stop it. You can fight against it basically. Okay, तो आप बोल रहे हैं कि information is one of the initial keys that you can use to solve this issue. कि अगर आपके पास information है कि इतने सारे अलग अलग टाइप के फ्रॉड्स होते हैं,
and you already are aware of it. And there are different versions to जो आपने बोला है नाइजीरियन प्रिंस फ्रॉड. बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि आपके परदादा ने आपके लिए बहुत बड़ी एक हवेली रखी है, or you have certain land in this particular country, and I'm calling from the government of that country, and you need to pay 5% in taxes, and if you pay that money, अगर आपने ये दिया तो ये पूरी जायदाद आपके नाम पे हो जाती है. तो definitely, I mean, I would be happy क्योंकि they are targeting a basic weakness of ours, and that is greed. और of course, अगर आप किसी को कुछ भी ऑफर कर रहे हैं फॉर फ्री, देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच एवर. सो अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हैं तो हम एज ह्यूमन नेचर हम ललचा जाते हैं. तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर यूजिंग दिस वीकनेस अगेंस्ट अस, टू लेट अस give out information that they can use to go ahead and perform this financial fraud on us or steal our data. तो ये हम it's more a psychological game कि हम जो हमारे साथ खेलते हैं fraudsters. And ये भी दाद देनी पड़ेगी कि मैंने बहुत सारे अलग अलग frauds के बारे में पढ़ा है कि ये fraudsters बहुत ही innovative है. बहुत you have to be like we've always discussed this with the Khayal community in our sessions that we have every Tuesday about technology, about fraud, about online data protection. To be a fraudster, you have to be smart, but then you're using those ideas, or you're just lazy and you're using it for the wrong things. आप गलत चीजों के लिए इसे use कर रहे हैं. So we also have a few members who have gone through a couple of frauds. So if the members would like to share that fraud that has happened to them, it would serve as a warning to other people, and we would get, we would know the kind of frauds that are prevalent in and around us. I'll definitely share mine. Agar if you want to share, a fraud that has happened with you, you can raise your hand or you can put it up in the chat, and we can take your question after that. तो मेरे साथ जो हुआ था, मैंने एक बार पहले भी बताया है सबको कि आई वाज जस्ट सर्फिंग ऑन इंस्टाग्राम, एंड इंस्टाग्राम में क्या होता है, वी ऑलवेज हैव ट्रस्ट इन इंस्टाग्राम बिकॉज इट्स सच अ बिग प्लेटफॉर्म. एक बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, और लाइक फेसबुक, लाइक इंस्टाग्राम, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एसोसिएटेड विद दैट. और वहां पे मैंने एक एड देखा that they were selling some clothes there, and I wanted to buy those clothes because they were attractive. The website which it took me to looked like a very formal website. It looked like a real website. Also the products that they had put were extraordinary. They were very good. It was too good to be true. And the kind of offer that they had given me, that I buy it for a good 70 to 80% discount. It was excellent. I thought I was the king of the world, and I found like something that it's very difficult to find, and it was my lucky day. तो मुझे ऐसे ही लगा. तो they played with me. I understood that they played with my mind, and they made me believe that this is a very good deal, and I went ahead and I used my debit card. I also got a parcel in return, and when I got it, they actually gave me some old something just out of context. It was not the product that they had promised me, and they just sent me something so that I would receive a product in return. Uske baad, when I went to contact that website, there was absolutely no one to pick up the call. एक नंबर था, उस ईमेल पे भी मैंने जब कांटेक्ट किया तो I couldn't get in touch with them. And definitely uske baad I did not pursue it because it was once bitten twice shy, and I do not want to go ahead and waste my time after it. But it was a lesson that I learned. Okay, I understood what mistakes I made. सबसे important जो चीज थी कि मैं समझ पाया कि ऐसे frauds होते हैं, और it basically ये fraud कुछ हजारों रुपए का fraud था, but इससे शायद मुझे लाखों रुपए की सीख मिली थी. Right? So, and I always share this and I always tell people about it so that I can inform more and more people about it. So we have Induji who has raised a hand, one of the members of the Khayal community. Namaste, good evening, Induji. And would you also like to let us know if
आप एक कोई फ्रॉड के शिकार थे, एंड हाउ डिड यू कोप विद इट? यस, हेलो विकास जी। नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्ते, मेरी आप आवाज सुन पा रहे हैं? लाउड एंड क्लियर इंदु जी। यस विकास जी, मेरे साथ हुआ था कि मेरा एटीएम कार्ड जो कि डेबिट कार्ड था वो मेरे पर्स से गिर गया। मुझे नहीं पता लगा वो कब गिरा। तो उसमें Okay. वाईफाई था, वाईफाई कनेक्टेड था वो कार्ड। एंड उस कार्ड से जिसके पास भी वो कार्ड गया, जिसको भी मिला, क्योंकि वाईफाई था उसमें तो उसको पिन की जरूरत ही नहीं थी, तो Okay. उसने 3,000 का जो भी लिमिट होती है उसकी, उस हिसाब से उसने 30,000 उस पर खर्च किया। Yes. और उसकी गलती ये रही कि वो लालच में आ गया इंसान जिसके पास भी वो कार्ड था, तो उसने 8,000 समथिंग की कोई चीज ली और उसमें उस कार्ड को यूज करने की कोशिश की, तो वो यूज नहीं हुआ। Okay. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके किसी के भी कार्ड में वाईफाई है तो उसको हटवा दीजिए। Okay. तो इंदु जी, कार्ड, if I may understand this, when you say Wi-Fi है, आप वो टच कार्ड था, which would not require a pin. यस। Yeah, Triya, if you could clarify that to our members, what exactly इसका मतलब क्या होता है? So what happens is कि डेबिट कार्ड में ये एक फीचर होता है कि जो वाईफाई कनेक्टेड होता है, तो डेबिट कार्ड इज कनेक्टेड टू द वाईफाई। तो क्या होता है कि अभी जब भी कार्ड मशीन आता है तो यूजुअली क्या होता है, नॉर्मल डेबिट कार्ड में हम डेबिट कार्ड को डालेंगे और वो एटीएम पिन एंटर करेंगे जो 4 डिजिट का पिन होता है आपका। लेकिन जब ये वाईफाई कार्ड होता है उसमें पिन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें सिर्फ वो कार्ड मशीन पे सिर्फ टैप करना होता है उस डेबिट कार्ड को, और टैप करने पे ही वो अमाउंट जो होता है, जो भी अमाउंट है वो डेबिट हो जाता है। लेकिन जैसे इंदु जी ने कहा, बहुत बार लोग क्या करते हैं, वो मैक्सिमम अमाउंट जो डेबिट हो सकता है उस पर एक कैप रखते हैं, जैसे कि उनका 3,000 था कि 3,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, और उसी तरह वो फ्रॉडस्टर पकड़ा गया क्योंकि उसने 8,000 का ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की। लेकिन इंदु जी, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू कि जब भी आपको पता चला दैट द कार्ड यू हैव लॉस्ट द कार्ड, आपने बैंक के साथ कार्ड को ब्लॉक करने की या कैंसिल करने की कोशिश की थी? डिड यू ट्राई टू कैंसिल इट? यस, मेरे को एक्चुअली बैंक से ही कॉल आया था। मैं कहीं पर बाहर थी, ड्राइव कर रही थी, तो मुझे इतना नहीं लगा कि बैंक का कॉल आ रहा है, क्योंकि बैंक के कॉल से ना कई बार होता है कि हम आपको ये दे रहे हैं, आपको वो दे रहे हैं। उस चक्कर में मैंने उसको नहीं उठाया कॉल को। और सेकंड, जब उसने फिर ट्रांजेक्शन की तो अगेन मेरे को कॉल आया कि आपने अभी अभी फ्यूल लिया है, उसमें अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाया है। मैंने कहा नहीं। तो मुझे थोड़ा सा ना फील हुआ कि कुछ तो गलत है। तो तब मैंने साथ के साथ अपनी, जो आपको पता है प्राइवेट बैंक जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं इस चीज पर, तो मैंने बैंक में कॉल किया। तो जो मेरी जिनसे मेरी बातचीत होती है, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा आंटी आप ना जल्दी से इसको नेट बैंकिंग से इसको बंद कीजिए, और फिर फर्दर हम क्या करते हैं, आप आ सकते हैं तो मेरे पास आ जाइए। तो इस दौरान ही हमारी बात में और कार्ड को बंद करने में उसने 3 ट्रांजैक्शन और कर दी। Okay. They are very fast. वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। और लिया क्या, घर का सामान और कपड़े। Okay. So Triya, you think they do this so that ये नजर में ना आए, ये this looks like a normal transaction to the bank also? Yes, absolutely. Okay. No, they उनको definitely. लगेगा कि इंदु जी खरीद रहे हैं ये सारी हाँ, चीजें। एग्जैक्टली तो इसमें क्या होता है कि अमाउंट ही, जैसे इंदु जी ने बताया, सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है, क्योंकि आए दिन, मतलब अगर उन्होंने 1,000 रुपए का भी पेट्रोल भरवाया होता तो शायद इट वुड हैव पास्ड ऑफ एज अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन, राइट? लाइक इंदु जी मेंशन, वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो उनके डेबिट कार्ड पे पहले भी चार्जेस हुए होंगे। तो इन केसेस में एक्चुअली अमाउंट पे ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ग्रोसरीज और कपड़े वगैरह तो हम सब लेते हैं, रेगुलरली वी कीप परचेजिंग ऑल ऑफ इट, तो इट मे सीम लाइक अ रेगुलर ट्रांजैक्शन, बट मेन ये होता है कि 8,000 का पेट्रोल कौन ही भरेगा।
तो ये मेन होता है कि अमाउंट है जो गिव अवे कर लेता है। नहीं, एक्चुअली उन्होंने 8,000 का पेट्रोल नहीं भरवाया था, उन्होंने पहले पेट्रोल भरवाया, डोमेस्टिक जो ग्रोसरीज होती हैं वो ली, कपड़ा लिया, ये सब बरनाला से हुआ। मैं चंडीगढ़ से हूँ और बरनाला जो है वो पंजाब में पड़ता है। तो उन्होंने ये सब वहां से लिया। जब उनको लालच बढ़ती चली गई ना, तो उन्होंने 8,000 समथिंग का कपड़े का ही कुछ लेना चाहा। तो उसमें वो मतलब जो भी है ओवरऑल, तब तक मेरा शायद बंद भी कर दिया हो, कार्ड को फ्रीज कर दिया हो, कुछ भी हुआ, मतलब मैं 30,000 में ही बच गई। क्योंकि अगर उसको पिन पता होता किसी तरह से भी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी आने वाली थी। करेक्ट। तो बस उसके बाद मैंने अपने सारे जितने भी कार्ड्स हैं, मेरे बच्चों के कार्ड्स हैं, मैंने सबसे वाईफाई हटवा कर और एक नॉर्मल कार्ड करवा दिया कि जिससे फर्दर कोई प्रॉब्लम ना आए। Okay, so thank you Indu ji for sharing that. इसके बाद we will also go to Prakash ji and see if he has a query or a question for us. But I just like to ask Triya, कि Triya, in this case, how does bureau come into play? आप इसे avoid करने के लिए what are the idea? What is the system that you would like to follow? So in these situations where someone's card has been stolen, or if someone's payment details have been, like payment credentials, like banking credentials have been taken over by someone, what we do is we do something that we call transaction monitoring. So over here, what we're able to do is like Induji's, they noticed that this is a transaction which she would not usually do. Like she may not purchase clothes worth rupees 8,000, or we have not seen her make a purchase worth rupees 8,000 in maybe the last 3 months. So what Bureau does is monitors these transactions that are happening from the payment side. And here, when we spot an anomaly, we will let the bank know. So actually, like she mentioned, that she lives in Chandigarh, so most of her payments from her debit card physically would happen from Chandigarh, right? But she mentioned that this person was making transactions in Punjab. So Bureau similarly here would have been able to spot that anomaly immediately, that we know that this card belongs to someone who is currently residing in Chandigarh. All her transactions are usually in Chandigarh, and we don't see we don't see any travel plans on her card either. So we know that she is still residing in Chandigarh. However, all of the transactions are started we would have been able to see that the first transaction which happened in Punjab, we would have been able to spot that as an anomaly. And then we would have seen that, okay, this is in a different location. The amounts are not coinciding. She never usually spends so much money on groceries. Even if she does, then there are further checks to keep all of this, and there are further checks to monitor the kind of transactions that are happening. So that as soon as we spot an anomaly, we are able to tell the bank that, hey, this is not the regular way in which a person has been transacting, and maybe there is a chance of fraud that is happening here. ओके, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप जो बैंक और कस्टमर के बीच में यू आर एन एक्स्ट्रा वॉल दैट मेक्स श्योर दैट देयर इज नो fraudulent transaction that is going on, so you monitor that also. Yes, Right. absolutely. That's great to know. It's like someone who's monitoring things that we don't understand, and a lot of times because online, I always tell people, it is like Mr. India. It is there, but you can't see it, but it is there. ये मिस्टर इंडिया के जैसा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, और हमें इस पे एक तो पहले ट्रस्ट करना चाहिए। बट क्या होता है अगर मिस्टर इंडिया की घड़ी मुगाइबों ने पहन ली, तो that can cause a lot of harm. So bureau will be someone will make sure that that watch stays with Mr. India. So I mean that's the only way I can figure out online transactions. मैं भी बहुत confused हो जाता हूँ बहुत बार. We'll go to Prakash ji, and then after that we'll go to Vora ji also. They want to ask a question to you, Triya. And if I could just request you to stop sharing the screen and we can come back. Namaste Prakash ji. A very good evening to you. नमस्ते मैडम त्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक तो ये वाईफाई एटीएम कार्ड है, हमको भी मालूम नहीं था, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली वी आर लर्निंग इट। बट मेरे को दो सवाल थे टू सॉर्ट ऑफ मेक माय ट्रांजैक्शन मोर सिंपल।
Can I somehow or the other tell bank कि मेरे ATM से कार्ड से रात को 11 बजे से सवेरे 5 बजे तक मैं कभी ट्रांजैक्शन करूंगा ही नहीं? I mean, so if something like that can happen, then I say that my card is disabled by the bank itself from say 10 o'clock in the night to 5 o'clock in the morning, because कोई मैं रात को travel करने वाला आदमी नहीं हूँ करके. Can I do that? This is one thing I want to know. Hi, Prakash ji. So, Prakash ji, I think this is something that would depend on the bank that you are currently with, where your account is. So, you can definitely check with them, because Bureau is a fraud prevention, services company, but we don't control. Rather, हमारे पास वो information नहीं होती है कि बैंक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है. So, I think it would be best if you would check with your bank and see if this is something that they can do for you. So I just actually wanted to know, as a community, अगर ऐसा कुछ होगा, तो it sort of prevents little bit of this thing. रात को 2 बजे कम से कम मेरे मोबाइल में कुछ SMS नहीं आ जाए कि 10,000 चले गए करके, because हम लोग सवेरे 5-6 बजे उठ के ही फोन को देखते हैं करके. So I don't know if it is there. If it is not there, probably बैंक को मैं जाके पूछूंगा, but ये आपके डिस्कशन में मेरे बीच में आ गया. और सेकंडली, कोई छोटा से छोटा ट्रांजैक्शन हो, इज इट पॉसिबल टू पुट इट टू वे ऑथेंटिकेशन? अभी बैंक ने क्या किया, 10,000 से ज्यादा अगर पैसे निकालोगे तो वो आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बोल रहा हूँ, तो वो आपको एक OTP आता है, वो भी डालना पड़ता है करके. बट जैसे मैडम ने कहा 2,000, 3,000 या फास्टैग, मतलब फास्टैग भी वाईफाई ATM जैसे ये मेरे को लग रहा है. बिकॉज मैं वे सोच रहा था कि वाईफाई चाहिए क्यों, इनेबल चाहिए, इतना क्यों आदमी आलसी हो गया कि वो डालना नहीं चाहता है कार्ड वो मशीन में, स्वाइप रीडर वगैरह. मतलब पर्सन बिकम लेजी, बट लेजीनेस का भी कुछ एक लिमिट होता है कि मेरे ब्रीफ केस में ही है और काम हो जाए. आई थिंक फास्टैग के कारण ये हुआ होगा, ये वाईफाई इनेबल्ड, एंड देन फिर बैंक के पास वाईफाई वाला तो वही आपको दे दिया होगा करके. Exactly. So can I put two authentication even for smallest amount? Again, as I know I have to go and ask to the bank, but शायद ये सोचने की बात है. No, but no, I think you will again absolutely you will have to check with your bank. But वो 2FA वैसे तो हो सकता है. So it depends, right? अगर आपका डेबिट कार्ड है और उस पे वाईफाई enabled नहीं है, तो अगर आप ATM में यूज कर रहे हो और if you are using it even on a card machine, you will still have to enter your PIN over there. So you have protection over there, and for online payments, OTP is enabled. It is an RBI mandate that you have to that they have to do 2FA over there. That for every transaction there has to be an OTP that comes to your mobile number. Thank you very much. Thanks. Okay. Thank you for that, Priya. We'll go to Vora ji after that. Very good evening, sir. Namaste. Hello. Hello. Yes, sir. Hi, Vora ji. यह छोटा सा सवाल था, ये वाईफाई कार्ड तो पहली बार सुना है, इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल मिल जाता है कि क्या है, तो हम बच्चों को भी समझा सकते हैं भाई ये वाईफाई का और डेंजरस चीज है. तो I don't think it's very dangerous, but it is something that ये नई टेक्नोलॉजी जो आती है, हमें हमेशा ऐसे लगता है. देखो वोरा जी, आई थिंक योर पॉइंट इज वेरी वैलिड, बट इट्स इट्स द फियर ऑफ द अननोन. मैं ये कहना चाहूंगा कि वाईफाई कार्ड डेफिनेटली हैज सर्टेन एडवांटेजेस फॉर इट, बट राइट नाउ उसका जो एडेप्टेशन है, इफ इट इज नॉट डन इन द राइट वे, तो हानिकारक हो सकता है. क्योंकि लेट्स इमेजिन कि पैंडेमिक हमारा चल रहा है, ओके, और उसके लिए ये वाईफाई कार्ड बहुत काम में आता है, क्योंकि देन you do not touch the surfaces, no one holds the card, so the problem of transmission of a virus or a disease will decrease. तो Wi-Fi card would definitely come into play. उसका advantages वहाँ पे भी हो सकता है. बहुत बार convenience भी होता है, जैसे हमारा जो फास्ट टैग होता है आजकल, we just the vehicle goes under the sensor and it takes the money for the toll that it has to go on the road. So Wi-Fi is a new technology, but बहुत बार हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि we need to understand this technology and also limit, like Priya said, a lot of transactions can be limited. You can put in a lot of safety checks for it. You can also take a lot of services like what Bureau offers to make yourself as safe as possible. जैसे हमने बोला है बहुत बार, there is no 100% safety, okay, but at the same time, that does not mean that you don't lock your doors. You need to lock your doors. चोर तो रहने ही वाला है बाहर. People are always going to be out there to try to get your money or get your data.
but you have to protect yourself as much as possible. या फ्रॉडस्टर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेकिन बैंक से अपने को एसएमएस भी आता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन होते ही एसएमएस आता है बैंक से. Correct. Okay. All right. So after Vora ji, I'll go to Ziria ji. She has a quick question. Good evening. Namaste. Okay, we're just trying to unmute Ziria ji if it's possible. Okay, I'm not able to unmute her. I think Prakash ji has one more question. We'll take that and then we can come to Ziria ji after that. Yes, Prakash ji. नहीं हो गया मेरा आंसर. I forgot to lower that. Sorry. All right. So Sorry. we'll just ask our moderators to unmute Ziria ji because I'm not able to do that. She's got a quick question. Okay. All right. So maybe she's got some problems with her network and we're not able to do that. And I have a couple of questions in the chat. So online shopping, when we do online shopping, Anuji has asked, so there's a lot of fraud and it's very common. So what is the safest way to do online shopping? I think one of the most important things when we are online shopping is to make sure that the site from which you are purchasing is a legitimate site. Sorry, Vikas, but to avoid what happened with you, I think it is very important for us that wherever we are shopping from, we know that this is a authentic site, or we know that we personally know someone who has already purchased from this site and has had a good experience, or the brand is known. I think it's very important कि हम ये information लेके फिर choose करें कहाँ से shop करना है. So that I think would be the first thing. After that, I think because you should always make sure that your payment credentials are safe, in the sense that the payment credentials you are entering are safely secured in the particular platform. That will again depend on the platform that you are interacting with. तो अगर मिंत्रा होगा तो मिंत्रा आपके कार्ड डिटेल्स को सेफ रखेगा. लेकिन अगर किसी ने कॉल किया और बोला कि मैं मिंत्रा से हूँ और आपका OTP SMS चाहिए, तो वो नहीं देना चाहिए. Okay, so the golden rule is never give your OTP, never give your passcode. Never. To anybody, right? Never, absolutely. Not to anybody. Okay. One more question from Anuji, that how do these fraudsters get our phone numbers and our email addresses? Who gives it to them? So the sad truth is that there are a lot of companies in the world who have these databases of us, right? मतलब बहुत सारे जगह है जहाँ पे हम हमारे email ID और phone number से register करते हैं, जैसे कि Facebook है या फिर Hotstar है. हम ये सारी जगह पे हमारा email ID देंगे या phone number देंगे login या sign up करने के लिए. Correct. जब भी Hotstar और Myntra जैसी जगह है, Facebook जैसी जगह है safe और secure होती है, कई बार क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो डेटाबेस फेच कर लेते हैं. उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो डेटाबेस फेच कर लेते हैं. दे गेट एक्सेस टू दीज फोन नंबर्स एंड ईमेल आईडीज एंड देन दे एंड अप यूजिंग दैट देमसेल्व्स, या फिर वो किसी को बेच देते हैं. लाइक आई एम वेरी सीरियस. पीपल एक्चुअली सेल दीज डेटाबेसेस. दे पे मनी फॉर द फोन नंबर्स एंड email IDs of people. So that is actually the sad truth of how it happens. Okay, so it is actually an industry that runs that there are fraudsters. उनका काम और स्पेशलाइजेशन है कि वो लोगों के ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट करे and maybe they will give it to another friend fraudster of theirs who will basically use it for a scam. Absolutely. Okay. All right, that's scary and great to know also at the same time. और उसके बाद we'll go to Prakash ji. Prakash Grover ji, she has a question. Good evening, Prakash ji. सर मुझे तो मैं आई लेट हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता क्या करना है. नो प्रॉब्लम. तो प्रकाश जी, आज हम ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में बात कर रहे हैं. एंड हम बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन ट्रिया जी ने दिया था, और हम इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पे भी डालेंगे, तो आप वहाँ पे ज़रूर देखिएगा. आपको फ्रॉड के बारे में थोड़ा समझ में आएगा और अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड से आप बचा सकते हैं. ठीक है. इसके बाद मैं जाता हूँ BN चंद्रा जी के पास. ही हैज रेज्ड हिज हैंड. गुड इवनिंग चंद्रा जी, नमस्ते.
Yeah. Good evening, sir. नमस्ते, गुड Hello. इवनिंग। Yes, sir. Good evening. नमस्कार। एक्चुअली हुआ क्या कि ऑनलाइन शॉपिंग की जैसे बात चल रही है, तो हुआ क्या, एक बार पेटीएम साइट के ऊपर मैंने एक एड पढ़ी कि था कि आपको हम i10 फोन दे रहे हैं 2000 रुपीज। मेरे साथ प्राइस तो लगा 2000 में, कहाँ से आईफोन दे देंगे ये। मैंने चलो स्टिल, अगर वो कह रहा है कि लास्ट चांस है, ये है वो है, मतलब कई चीजें उसमें, आई सेंड रुपीज 2000 भाई अपने उससे में ऑनलाइन भेज भी दिया। उसके बाद उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोशिश करता रहा, फोन करता रहा, कुछ दे आर नेवर रिस्पॉन्डेड टू दैट। उनको मैं मैसेज भी डाला, वो भी डाला। आई डोंट नो, या तो ऐसी साइट्स तो कोई चेक करने वाला है ऐसा, या क्या किया जाए ऐसे, हमें तो कैसे क्या पता लगे कौन सी साइट ठीक है कौन सी तो नहीं है। चंद्रा जी, आपके समथिंग साथ लाइक, जो हुआ वो एग्जैक्टली वही मेरे साथ हुआ कि जी जी ये ऑफर जब टू गुड टू बी ट्रू होती है, जो हमें ऐसे लगता है कि इतनी अच्छी ऑफर कैसे है, तब या देयर शुड बी सम अलार्म बेल्स हमारे दिमाग में, हाँ थोड़ा एक वो, ऐसी बत्ती जलनी चाहिए कि ये कुछ गड़बड़ है। और क्या होता है, ठीक है, हमें कंफ्यूजन है तो हमें किसी और से बात करना चाहिए, हमें हमारे फ्रेंड या फैमिली से या कोई और जो जानकार हो सकता है उसके बारे जी में जी, हाँ हम जी हाँ बात जी, कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, टू ब्रेन्स आर बेटर देन वन। तो अगर दो लोग सोच रहे हैं तो शायद उनमें से एक को एक रास्ता मिल जाए या उनको एक सोल्यूशन मिल जाए, और दे कैन स्निफ द प्रॉब्लम बिफोर दैट। तो जी वो सर। तो हो सकता है। तो एग्जैक्टली और चंदना जी, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि आप ये शेयर कर रहे हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं, अरे मैं क्या बोलूं, मेरे साथ क्या हो हाँ जाएगा। नेचुरली सही कह रहे हो सर। ये उस बार कई बार सोचने का टाइम भी नहीं होता, वो कहते नहीं अभी जो टाइम है पता नहीं उसके बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। इस सस्पेंस में रह के लोग उसको आगे प्रोसीड कर जाते हैं, और फिर उसके बाद दे नेवर रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग, चाहे जो मर्जी करते रहो। एक केस में तो ऐसा हुआ सर, वो मैंने उसको बोला कि आपने गलत भेज रहे हो, जो भी है काम कर रहे हो। 500 मेरे किसी तरह उसने निकलवा लिए मेरे से। तो मैंने कहा भैया तेरा यह नंबर जो है मेरे पास, मैं भेज दूंगा किसी के पास, पुलिस में भेज दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या जो मर्जी करना कर लो, ऐसे तो रोज केस हमारे साथ होते हैं। आई वी डोंट बॉदर सच थिंग, उनको परवाह भी नहीं है, दे डोंट बॉदर इवन, मतलब उनको कोई डर नहीं किसी चीज का, कोई किसी अथॉरिटी का, किसी लॉ एंड ऑर्डर का, नथिंग लाइक दैट। वो कहता ठीक है आपने जो करना कर लेना। पता नहीं है, आई डोंट नो। तो इसमें आई कुड ओनली जस्ट टेल यू वन थिंग, क्योंकि सी हमारा देश बहुत बड़ा है, राइट, और हम या अब बहुत हजारों लाखों मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होते होंगे दिन में। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी होता है जो गवर्नमेंट के तरफ से होगा, वो कितने केसेस को फॉलो कर पाएगा, क्योंकि ऐसे ही कितने जो और बड़े बड़े क्राइम्स है, पुलिस इज टेकिंग केयर ऑफ दैट एंड ट्राइंग टू डू दैट। तो इसके पीछे जी दे डोंट हैव द bandwidth to work on these crimes. And like I told you, जो ये fraudsters होते हैं, they do, this is their job, उनका काम है कि वो लोगों के साथ फ्रॉड करे। अगर उन्होंने ऐसे 4 फ्रॉड भी अगर दिन में कर दिए, तो दे मेक इनफ या फॉर देमसेल्व्स टू सस्टेन दिस ऑपरेशन। तो यही है, हम क्या कर सकते हैं हमारे लिए। जैसे मैंने आपको ये भी बोला था कि एक I give a very simple example that I used to use। अगर आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो इन अ होटल और समवेयर, तो आपको क्या करना चाहिए कि या अपने रूम में यू शुड स्विच ऑन द टेलीविजन व्हेन यू लीव। तो इससे क्या होता है, तो अगर इफ देयर समवन हु इज ट्राइंग टू रॉब योर रूम, ही विल ऑलवेज लुक एंड सी कि इस रूम में तो शायद कोई होगा, तो मे बी आई विल नॉट रॉब दिस रूम, आई विल ट्राई टू गो टू अनदर रूम एंड ट्राई टू ओपन द लॉक, जहां पे आई कैन नॉट ओ हियर या एनीथिंग एंड आई थिंक कि वहां पे कोई है नहीं, द लाइट्स आर ऑफ। तो उससे आपने क्या किया है, यू हैव मेड योरसेल्फ अ डिफिकल्ट टारगेट। तो ऑलवेज मेक योरसेल्फ अ हाँ डिफिकल्ट थोड़ा टारगेट। ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जी जी although the fraudsters are smart, remember they also have one weakness, is that they are lazy, they want easy money। okay, so don't make it easy, इतना आसान मत बनाइए कि आपसे पैसा ले ले। आप ऐसा पैसा जेब में डाल के जाओगे तो दिख जाएगा ना, तो उनको दिखाइए मत आपके पास कुछ है या कुछ।
right? तो वही अरे आपको सर वो तो कहते हैं हमने अपना टारगेट पूरा करना है, हमारा आज कहते टारगेट जो है ना पूरा नहीं हुआ अभी तक, we have जिस दिन मेरा paid टारगेट पूरा होगा मैं छोड़ दूंगा मैं, वो ये भी कहते हैं कहते मेरा टारगेट अब भी है, अगर सपोजिंग मुझे 75,000 कमाना है तो अभी थोड़ा टारगेट कम है, अभी मैं 50 ही कमा चुका हूँ, 25 मुझे और कमाना है। You're right. So it is an industry. कहते हैं हमें, हमने ये काम है So करते हैं, वो तो basically, कहते हैं, वो तो हम कर रहे हैं भाई। हाँ ये क्या पता है क्या किया जाए। ठीक है सर, thank you. एनीवे लेट्स। तो एज मिस्टर चंदना ने जैसे हमें बताया कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो इज यूजिंग दिस सिचुएशन वेयर there is a little bit of misinformation, there is a little bit of leaks, and they use this against you. So that is where people like TRIA come in, where organizations like Bureau come in. Basically आप देख सकते हैं they are like the sheriff in this wild west, and they are trying to bring order to online transactions, and they are trying to bring safety to this this crazy world that we are entering in. It's like the wild west literally in the online world right now. So iske baad we would go to Asha ji. She has a question, she's raised a hand, and we have another 7 minutes till we conclude today's session. Before we go to Asha ji, I would just like to remind you, make sure that you go to the Khayal app and register for all the sessions that are there. Please register for the Friday Stambola by Thursday latest, because the registration will close and you will not be able to participate in our fun and games. Iske alawa, we also have the refer and win contest for all our community members. So if you're a community member with Khayal and you would like to refer more people so that they can come and take part in our different activities, which are specially designed for seniors and elders to help them understand this new world of online transactions. We also do have a lot of fun. We sing a lot of songs, and we also have exercise and yoga sessions for you every day. And if you would like your friends and family to be a part of that, you can also do that by taking part in our refer and win contest. And as a thank you, you will definitely win an assured prize if more than 10 people join the Khayal community in a week with your references. Now we'll go to Asha ji. Very good evening to her. Namaste. Namaste. Thank you so much. I joined a bit late, but like you said, the hotel room, when you come out, lights automatically nowadays, they get switched off. That was a very good idea, leave the TV on. But we cannot do that nowadays. Yeah, so we'll try to do as much as we can, the different things that we can do. Another thing was like we, get caught in ki ye offer bahut acha hai. Recently, I saw this offer on Instagram, Sagar Ratnas ki ek thali par do thali free. So first I thought it was, too good to be true, but somehow, I don't know, I got caught in it. And I thought I'll order for my son's office. We don't eat so much outside food. And I also found a friend कि ऐसे offer है तुम्हारा तो 3 लग जाएंगे, you are more people, so you buy this. And you won't believe that guy was with me on the phone for more than half an hour. And I was thinking he's so nice that he's helping me out. And I gave him all my details, credit card ka CVV number bhi. Though I tell everyone ki nahi. But as soon as and my husband helped me, कि this card is not working, दूसरा card लाके पकड़ा दिया, फटाफट that, and we gave him everything. And as soon as we put the phone down, we realized that what we did was wrong. So we immediately blocked the card. We were able to, and that the person called and he said, कि आपका money नहीं आया. I said, I have paid, I have told. He said, no, I have tried. Your card has been blocked. He knew. He tried after we had given our details. And he said the card has been blocked. And that card had a lot of money in it. The balance used to be quite high. So fortunately, we were saved. And after several months, a similar thing happened again. I was sleeping and my husband told me that the reward points we won't be able to use them anymore. And I told him, let me sleep, I'll wake up later. And I always tell him to try on his own. So he tried.
और उन्होंने सब डिटेल्स भेज दिए. And after 2-3 hours when I woke up, and then he tells us कि उन्होंने ऐसे कर दिया है, and we knew that was a fraud because I also got the same message, and the amount which they send is like 2389 कि वो डाउट नहीं होता है. But then when my son came, तब तक fortunately उनका कार्ड यूज नहीं हुआ था because that guy had too many cards with him. So he was not able to, we were lucky, he was not able to use our card. Then when my son came, he blocked our card. क्योंकि I don't know, phone पे नहीं block हो रहा था, internet banking से ही block होना था. So though we say कि मत दो, like I always tell people कि ऐसे नहीं देना चाहिए, कोई भी offer है. It's not true. No offer which, as you said, is good. But unfortunately, कभी-कभी हम फिर भी खुद ही फंस जाते हैं. करेक्ट. तो आई थिंक हमें हमेशा अपने आप को याद दिलाना चाहिए ये सारी चीजें. बहुत बार हम कहते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, बट I टेल माई सेल्फ दैट आई विल कंट्रोल माई डाइट बाय, बट एवरी डे आई एंड अप गोइंग टू द फ्रिज टू चेक what is new to eat. So what I have done is I've kept a paper on the fridge to say that what are you doing here. So in this way maybe we can find a hack and try to remind ourselves. So इसीलिए आशा जी, we have people like TRIA, we have organizations like Bureau, which has identified this gap and this issue that is happening. And it is like, Vora ji and like, other members have said, this is an industry. Fraudsters का एक, मैं बोलता हूँ, एक उनका एक कंपनी भी बन सकता है. इतने fraudsters है कि इतने लोग हैं कि लोगों को ठगने के लिए यहाँ पे है. तो we have to be careful. हमें अपने आप के बारे में सोचना है. And change our habits, also take help of organizations like Bureau. So Bureau is also working with organization to organization by helping them. So could you put a little bit of light on that, Triya, and help us understand how you are trying to make the online scene safer for everyone? Sure, absolutely. So like I've mentioned earlier, Bureau is a fraud prevention services company. So what we do is we work with all the the online platforms of the world, जैसे कि Dunzo है, Zomato है, Swiggy है, Myntra है. हम ये सबके साथ काम करते हैं and we try to see कि who are the people who are trying to defraud or who are trying to be fraudulent on these platforms. तो हम क्या करते हैं कि हम वो गुड एक्टर्स और जो बैड एक्टर्स होते हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि देखते हैं कि कौन अच्छा यूजर है, कौन बुरा यूजर है, कि क्या चांस है कि कौन सा यूजर फ्रॉड कमिट करेगा कि नहीं वो प्लेटफॉर्म पे. सो बाय डूइंग सो वी हेल्प दीज कंपनीज, वी हेल्प देम आइडेंटिफाई दिस सो दैट वी कैन रिड्यूस फ्रॉड ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स. सो लाइक आई मेंशन्ड, वी वर्क विद दीज जायंट्स. वी आल्सो वर्क विद अ लॉट ऑफ नियो बैंक्स, वी वर्क विद अ लॉट ऑफ कार्ड इशुएंस कंपनीज, क्योंकि जहाँ पे फाइनेंस होता है वहां पे फ्रॉड होने का चांस ज्यादा है. क्योंकि जैसे विकास जी ने बताया, everyone is greedy. These fraudsters are playing into your greed. So that's why where there are payments, they try to commit fraud over there. So that's where Bureau comes in. We help identify these. We use a lot of different techniques. Like I mentioned, the transaction monitoring bit. We have a lot more things like those where we are able to identify fraudsters and therefore stop them before they can cause any harm to the platform or other users like all of us. That's right. That's right. Thank you, Triya. Thank you. That was an eye opener of a session. हमें बहुत सारी चीजें सीखने मिली है और हम ये हमेशा बात करते रहते हैं हमारे कम्युनिटी में. We try to keep ourselves maybe a step behind the fraudsters. It's always a cat and mouse game, जैसे आप कहते हैं कि we are always trying to play catch up with them. But with sessions like this and information that you give us, our community members can be better and more informed to protect themselves from online frauds and also online data breaches. So thank you very much. It was a great session, Triya. Thank you for the time that you have given to the Khayal community. And we'd also like to invite you maybe tomorrow, if you are free, you could come and watch one of our sessions that is there. We have a very important session called prevent deafness and hearing loss, which is especially true for a lot of our seniors. As we age, we realize that we're not able to hear very well,
And a lot of wives think that their husbands are not listening to them, but actually maybe they also have a little bit of hearing loss. So we have Dr. Krishna Vora, who is going to go ahead and come and talk about, how we can take precautions to prevent, hearing loss as we age. तो आप ये सेशन कल अटेंड कर सकते हैं एज यूजुअल. इट इज गोइंग टू बी एट 5:30 with the Khayal community, and you can also let your friends and family who maybe don't listen to you when you tell them to come for the session कि आप थोड़ा मेरी बात सुन सकते हैं if you come for the hearing loss session. So goodbye everybody, and thank you, Triya. Any so much. one parting important point that you would like to tell us that we can remember, like a golden rule that we always ask, एक छोटा एक चुटकुला या एक one weapon that we can always use when we are doing any online transactions ताकि we are safe. Absolutely. I have said this throughout the session. Please never ever share your details with anyone, whether it is your banking credentials, आपका PIN है, कार्ड का CVV है, या फिर आपका OTP SMS है. किसी अनजाने इंसान के साथ never share it. Never give your private credentials to a stranger, because it is extremely important to keep this information safe and sound. I think that is the most important thing all of us should keep in mind. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज जस्ट लाइक बचपन में हमें बोला था किसी अनजान व्यक्ति से कुछ लो मत. आई थिंक नाउ इट इज रिवर्स, किसी अनजान व्यक्ति को अपनी डिटेल्स मत दो, राइट? सो वेरी सिमिलर टू दैट. सो थैंक यू एवरीवन. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. वाज वेरी इंफॉर्मेटिव. ट्रिया, थैंक यू वेरी मच. आप आया करो ऐसे, और हमारे ख्याल कम्युनिटी के साथ आप बात कर सकते हैं, एंड गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप डील करते हैं फ्रॉड के साथ, आप डील करते हैं ये जो ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं इसके साथ, एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू नो. Also at the same time, it helps us keep ourselves safe on online transactions and prevent data breaches for the Khayal community. Absolutely. So if you like this session, you can definitely go ahead and give a thumbs up to Triya, so that we really can tell her that we appreciate the time that and the effort that she has put into come and talk to the Khayal community. So goodbye everybody, and there was a great session. I hope to see all of you for tomorrow's session on hearing loss on Wiser Wednesdays with Dr. Vora. Goodbye and have a great evening. Thank you. Thank you everyone. Thank you for joining. Thank you, Triya. Goodbye. And a big thank you also to the Khayal community team of Raisa, Mario, Chinmoy and Alfia for always being there and assisting us with all our sessions and programs. Goodbye.